Hello, friends who are joining in. Hi. Today I'm just doing this surprise live session. It's not really about me. It's not about my journey and my comedy, but yeah, a little bit about that. मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप लोग बहुत कुछ स्वीट लिख रहे हैं, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ, so I can't see. So just 1 second. चश्मा पहनने दो, कुछ नहीं दिखता मुझे. Yes, now it's clear. You're amazing. Thank you, Rupali. Thank you, ma'am. Melisma skin के लिए क्या क्या देख लो, मेरे डार्क स्पॉट सब कुछ है. ओके तो कुछ नहीं है यार, जितने बार लानी है क्रीमा बट चल रहा है तो चल रहा है. So today anyway I'm doing this little special session for a very close friend. She's going to join in soon. Her name is Divyaa and she is a wellness coach and a law of attraction she practices. Just 1 second please. Okay, I'm waiting for her to come in and hello everyone. Well, you are like today's date 10 on 10. या ये मैं ऐसे कर लेना चाहिए था मुझे इसको ना स्क्रीनशॉट. Such a cute thing to say. Thank you so much. Such a cute thing. I didn't even realize that. That is very nice, very sweet of you. Thank you very much. I'm grateful. I'm very grateful. And so, like I'm grateful to all of you for following me and for following my journey. I'm very grateful. And this whole thing about gratitude and being grateful, ये मैंने अपनी एक बड़ी close friend से सीखा है. So today I'm here to support her and her journey. And so we're going to talk about a little bit about law of attraction. And she's a close friend and वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को practice करती हैं. उन्होंने मुझे सिखाया कैसे करना है, कैसे इसको आगे बढ़ना है. And if some of you are interested, please do be here for some time. 20-25 minutes का हम ये करेंगे live session. And I'm going to send her a friend request जो मुझे भी नहीं आता, but हम सब ऐसे ही हैं. Invite to join. Hi, good evening, Mrs. Bains. Can you see me? Yeah, you can see me. Yeah, Yes, I can. and I'd like to hear from my friends if they can see Divyaa as well. Can somebody write that they can see Divyaa and hear Divyaa? I would really appreciate if someone can write, yes, we can see Divyaa. How tall are you? I'm 5 feet 10 inches, but can somebody write if you can see and hear Divyaa so we can start this chat? Hi, Harpriya, happy to see you. Thank you. So yes, somebody said we can see her. So thank you very much. So I'd like to introduce Divyaa. She's a very close friend of mine, and I know her since many years now. I don't know how many years. 2013. And she's a lovely 2013. Yes, 14. Yeah, 14, she's a lovely 14. young woman, a mother of 2 children, and also an army officer's wife, and a very highly educated woman. And she's been taking very senior classes of science she used to teach. But what she truly found her calling was with law of attraction. She practices law of attraction, and she taught many of us, people like me, how to practice, how to go about these things, and how we can apply it in our lives and change our lives forever, and find direction to our lives. And I am very grateful to her, because she has guided me in so many things, and a lot of things I did during my entire comic journey the last few years was a lot of way that she told me, and I did that along with hard work. वो मेहनत भी करनी पड़ती है, ये नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें और जाके बीच पे जाके सैंडविच खा लें, तो काम भी करना पड़ता है. मगर वो कैसे उन्होंने मुझे गाइड करा, she will tell us a bit about it, and we'll talk about that. And we hope that it will help you too. And if you want more information on it, then you can follow her and contact her for that. So yes, Divyaa, over to you now. Thank you so very much, Mrs. Bains, for such lovely and kind words. And I must say, hello everyone. I am Divyaa S.Kumar, and you all know Mrs. Bains a lot. Mrs. Harpriya Bains. Everybody knows her, and she needs no introduction. She is true example of
she's actually the true example of like women empowerment. She has been always my inspiration. I have learned a lot. I mean, she's my mentor always, and she'll be my mentor always. So I have really learned a lot from her in my life. And Mutual admiration club, I think, going on. She's calling me Miss. yeah, She's also an army wife, and वो बेचारी मतलब वो आदत से मजबूर हमारे अंदर गड़ा होता है कि हमने मिसेज ही बोलना है. Anybody who's slightly senior to us, मैं जितना भी उसको बोलूं, call me Harpriya, but उसके मुंह से अब मिसेज ही निकलेगा. so yes, you all know that she's amazing, lovely lady, and mother of two, and doing really all the good things all together, managing work life balance amazingly amazing. मतलब ये सारी चीजें तो मिसेस बेन्स के अंदर बहुत पहले से थी. I have been, you know, seeing this thing from past 7 odd years कि she's managing everything आराम से बिल्कुल smoothly. So thank you, Mrs. Bains, that you're always there and you're inspiration for many people, and one should learn so many things from you. So learning is never ending. But still, Mrs. Bains को मैंने थोड़ी सी हेल्प करी है लाइफ में. जो उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उनको थोड़ा सा बताया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शी इज़ ऑलवेज बिन इनटू दैट जर्नी ऑल टुगेदर. But yes, I would like to ask you, Mrs. Bains, that how things really worked for you. Like, how much do you think that gratitude is important in our life? Very, very important, Divya. Very, very important. Gratitude is extremely important, and I think शुक्र के बगैर, शुक्रान के बगैर कुछ भी नहीं है. क्योंकि हम अगर शुक्रान ना करें तो आई थिंक हम अपनी लाइफ में इतना चिड़चिड़ पिड़पिड़ करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता. और उस चिड़चिड़ पिड़पिड़ में we forget to appreciate what we really have, and we forget to appreciate the you know, so many little things that we take for granted every single day. Things like नलके में पानी आ रहा है, things like हम सांस ले रहे हैं साफ, things like धूप निकल रही है, हमारे कपड़े सूख रहे हैं, and you know, things like बारिश आ रही है तो गर्मी जा रही है. You know, so many things. There's food on our plate, and there's water in our room, and we know we can survive so well, and we are still so much better off than so many people. So शुक्रान के बगैर कुछ नहीं है. हमें शुक्र करना चाहिए हर एक चीज का. और आई थिंक जब हम शुक्र करना सीखते हैं और शुक्र की वैल्यू को समझते हैं तो जिंदगी अपने आप एक ट्रैक पे आ जाती है और बड़ी खूबसूरत होने लग जाती है. You're right, Mrs. Bates. So as we, excuse me, as we all know that we all are living in tech-driven world, and everybody is so educated over here. If we talk about Mrs. Bates, she is very highly educated and working professional. If we talk about me, I myself as a biology NEET faculty, I worked with national brands of edtech in institutes. So it is like something which is not which you really cannot understand the power of gratitude and law of attraction. So first of all, I would like to tell you that I am a certified law of attraction coach. So there are certain steps, like you follow gratitude, but how do you have to channelize your energy to get to manifest your desire, to get your goals? That is very important. So क्या होता है कि हम लोग कर रहे होते हैं चीजों को, लेकिन हमें आइडिया नहीं लग पाता है. Then we feel low कि अरे इतनी देर इतना सब कुछ हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं लेकिन तब भी नहीं हो रहा है. So ये बहुत ज़्यादा important है कि gratitude is the very first thing when you are going to begin your journey for law of attraction or manifestation. So gratitude is the basic thing you should start with. But gratitude करने का भी ना तरीका होता है. Like you are like Mrs. Bains, you remember we used to do a lot of gratitude. Like when you wake up in the morning, you should be, you know, saying thank you to the electricity. That yes, the geyser में गर्म पानी आ रहा है. You should be saying thank you, like such things. कि जो भी ये लाइट है, आपकी गैस में आप चाय बना रहे हो. So little things that you हमें याद नहीं रहता. सोने से पहले, I remember you told me कि सोने से पहले 3 चीजों को याद कर लो कि आज के दिन में 3 क्या अच्छी चीजें गई. That thing, that is that you know, I feel कि जैसे हम अपनी भागदौड़ में प्रे करना भी भूल जाते हैं कभी कभी. कि आज चलो नहीं पूजा कर पाए. हम बहुत लोग बहुत रिलीजियस, मैं भी बहुत हमेशा से इतनी रिलीजियस नहीं थी, अब थोड़ी ज्यादा हो गई हूँ. लेकिन मैं कहती हूँ जैसे बच्चे सारा दिन नहीं करते इतना पूजा पाठ, लेकिन मैं ये आदत मैंने थोड़ी बच्चों में भी बोलती. व्हेन यू स्लीप, यू नो, जस्ट थोड़ा सा भगवान का नाम लेके, जैसे जस्ट रिमेंबर द 3 great things that happened in the day, you know, and then just say thank you because something great must have happened.
You know, whether you got a pizza of your choice, whether you got a book of your choice, whether you just played, whether तुम्हें आज, my younger one, she says, हाँ आज हमारे ना सारे period free मिल गया, this was the best thing that happened. So even that, you know, so that Yes. is a beautiful thing. And you suddenly feel more peaceful that yeah, आज maybe 10 काम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 5 काम हो गए. So that is so important. जैसे हमारी लाइफ में 100% हमको जो मिला होता है, जो हमें नहीं लगता है कि हमें नहीं मिला है, क्योंकि 100% तो ऑब्वियसली हर किसी को नहीं मिला होता है, लेकिन 80% होता है. बट हम रो किस चीज के लिए रहे होते हैं? वो 20% के लिए. जो 80% मिला है, हम उसके लिए कभी भी वी नेवर सिट एंड से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग. लाइक आप अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि हैव यू गाइस एवर सिट एंड सेड थैंक यू to your elementary education, जो आपने क्लास नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, when you go out, you see people, आप लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे लोग they are not even getting their elementary education properly. If you talk about, मतलब किसी भी जगह की बात कर लो, कभी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, कभी कहीं पर कोई कुछ बंद है, कुछ ऐसा है कि काफी टाइम के लिए उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा. बट नहीं, हम लोग के कई लोगों को आप मिलते हैं जिनके बहुत पेरेंट्स के साथ बहुत कंस्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं. सो बट फिर भी उनके पेरेंट्स ने उनके लिए फिर भी बहुत कुछ करा होता है. यू नो, एजुकेशन, मैं कहती हूँ उसके लिए शुक्रान करो कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखा तो सही ना. मतलब कि यू आर फॉर्मिंग योर ओन ओपिनियंस, but you know they gave you that education. So many children are craving for the education, but you didn't get the education. Sometimes I think when I see it in the Gulf countries, the problems that are happening and how regressive they are about women. Oh my God, when I read that, and I thank my Lord that I was born in India. You know, I was thank my Lord that I was born in the family. Yes. I was born in a country like India where we are still far more liberated and we have still far more rights than women have in some countries. Yes, true, very true. This point is really true. We have freedom of everything, all the things, right? Most of the things we feel free. We are safe, secure in many parameters if we think about it. All right, so let's talk about your journey, because you are doing really awesome, and many more such success and everything to you, Mrs. Bains. So when did you start law of attraction? I mean, when did you get to know about it, and when did you start law of attraction doing mindfully? I think I started it back in Goa, and that also after having a conversation with you when the first time, and I'm talking about 5 years back, and 5 or 6 years back, and that is also after having some telephonic conversation. In fact, I remember the first you told me about it was at a dinner table. We were sitting across each other, and you're like, Mrs. Bains, have you read the book Secret? I was like, hey, what is that? I remember. Oh, have you read it? It's like really a game changer. It's a life changer. I was like, okay, whatever. But I didn't really look into it for another 1 year maybe. But then after 1 year, हमारी कुछ बात हुई थी, some conversation, and you said, no, you first read this, then you'll get on with other things. So when I read it, after you told me, in fact, to read it, so I read it, and I found it very interesting, very intriguing. And then I just, I read the next part also. I have forgotten the name of the book, the next one, which is after Secret. Magic. Magic में था कि you follow a procedure, है ना? उसमें होता है. Yeah. First time, that was in Shimla. We were in Shimla that time, so this must be 2018 or something. And that is when I did that myself. I followed that 21 days या whatever जो days का वो था process, जो book के हिसाब से जो था कि आप रोज एक journal maintain करिए और उसमें वो लिखिए चीजें. And somehow I found it very, very liberating just to write down everything. Yeah, that is very important. Yes. कभी नहीं करा था. इतनी हमारे दिमाग में इतनी अजीब ख्याल और सब कुछ चलता रहता है ना. So it can be so complicated in your head, and some things are just useless in your head, which are just taking your energy away. Yeah. You know, so write it down. बहुत कुछ निकल जाता है बाहर यार. Yeah. So yes, as she said, ki writing down. So there is technique also. Like later on, I have learned this technique that how to write down, what all need to be written, and how to release the blockages from your thought process. And these blockages we only accumulate. Yeah. We are into that kind of thinking कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है.
और हम पूरा दिन लगा देते हैं। जो एनर्जी हमें फोकस करनी चाहिए कहाँ पे, कि जो चाहिए वो चाहिए, बट हम सारा टाइम क्या सोचते रहते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा तो Yeah. ऐसा हो जाएगा, यू नो, फालतू की चीजें जो एग्जिस्ट, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. सो जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट डिस्कार्ड इट. Yes. सिंपल. That is the simplest way. And Clutter. It clears a lot of clutter from your brain. yeah. And Mrs. Bains, what is, I mean, how do you follow, what all steps did you follow? How did you follow it properly? Do you follow it right now also regularly? So after that, I did one session with you when you made me do the basic session of law of attraction, where we did some exercises together. I think that was also for about 20 days. ऐसा कुछ था ना? कुछ Yeah, a few 21 days. days. All the sessions are for 21 days. 21 days, yes. Session, I think 1-2 साल पहले we did one session, and one session we did also Yeah, in like May. one session is like for 21 days, and there are certain other sessions also for 7 days also. Yeah. Yeah. So we did that 21 days session a couple of years back, and then again there were things from the book and some other things you told us, and I did all of that. So some things actually, since the first time I did that, I read the book Magic and Secret, and I practiced that journal thing. So some things stayed with me since then, even before I did your course, which was the basic journal writing. So I wouldn't say I'm 100% regular with it, or I write it every night. But yes, on an average, I try to write it at least 3-4 times in a week, or at least twice a week or something. कुछ तो भी लिखे देती हूँ बीच में आता है महीना जिसमें बिल्कुल ही नहीं लिखते, बट फिर मैं महीने में एक बार पूरे महीने का चिट्ठा ग्रेटिट्यूड का I write it down. So something I write down. So that gratitude journal is something that stayed with me, and I in fact made my kids also start it, and they followed it for some time. But you know how kids are, they get away. वो छोटी वाली फिर भी कभी कर लेती है. Elder one is lost track of it. But so gratitude journal is one. Then the other thing is saying thank you in the morning when you wake up. Just shukran Bhagwan ka when you wake up, and this 3 things to remember at night. So that also, see, now I know with all these things, आप हर रोज religiously नहीं कर पाते हो. Sometimes आप कुछ आपके दिमाग में होता है या कुछ आप चाहते हो, तब आप फिर भी रिगरसली उसको फॉलो करते हो, लेकिन हर वक्त नहीं कर पाते हो. लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कई चीजें आपके जहन में अगर आ जाती हैं, रह जाती हैं ना, तो आप उनको कभी कभी भी कर लो, तो आई थिंक दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो दैट आई डिड. देन आई डिड द कोर्स विद यू, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन. मैंने फिर काफी टाइम तक करा, and then once I did this course with you in February again this year. Yeah, this year. Little advanced, other things you made us do, meditative and all of that. And let me tell you, ladies and gentlemen who are listening, that we did I did a course with her on meditation. And what exactly was that course called, Divya? The one that we did in February. That's also law of attraction. Law of attraction. Advanced law of attraction techniques were introduced over there. Wake up. I mean, she's the coach. हम 6 बजे शुरू होते थे, ये 5:30 पौने 6 से उठ के she would be up and about. हमारे जैसे फिर भी she would be calling us at 5 to 6. You उठ जाओ, बस सेशन है. Yeah, we just coming. We would do it from 6 o'clock in the morning to 6:45, and वो भी हमने 21. It was tough, but it was amazing, because again we learned some very beautiful things. And I would say, just the fact of just getting up at 6 in the morning and starting your day with something so beautiful as gratitude and just meditation, and बस एक ध्यान लगा के आप कुछ चीजों में शुक्रान कर रहे हो और अपनी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल रहे हो, अपने ब्लॉकेजेस को निकाल रहे हो. आई मीन, फिर दिन तो अच्छा जाने ही जाना है ना, फिर मतलब कुछ ना कुछ बेहतर तो हो ही जाता है. So yeah, so these are few things that stayed with me. In fact, I'll show you my gratitude journals are right here with me. This is one of my gratitude journals. So wonderful. Gratitude journal. So many of them lying here. In fact, when I started out with Divya, I can show you. Maybe होएगी. ये मेरा पहला gratitude journal था. See. Wow. That is what I tell to each and every one of my clients, ki buy something with lots of love, which you really love and feel like. Diary of joy I've written on this. Wow. That's wonderful. This was my first gratitude journal. The magic began. This was my second one in 220.
So yeah, I have all these gratitude journals with me. I still have them. Sometimes I flip through and read उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. And शुक्रान करती हूँ मैं कि बहुत सी बातें सच हो गई. सबसे बड़ी मेरी कॉमेडी की जर्नी में जो भगवान ने मेरे पे बहुत मेहर दिखाई. और so yeah, things stay with you. So professionally it helped. And how, Mrs. Bains, do you think that personally, like in like if I talk about your health, mental and physical health, did you feel any difference? Anything? Yes, yes, absolutely. Even personal life में बहुत से changes आते हैं. बहुत सी मतलब I wouldn't say सिर्फ professionally. In fact, there are certain things जो मैंने personally भी कुछ चीजें थी जो एक blockages थे कुछ वक्त. कभी जब हम दिल्ली शिफ्ट करे तो मेरी daughters के स्कूल एजुकेशन स्कूल एडमिशन्स को लेके कुछ स्कूल में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत मेजर थी मेरी एक डॉटर को. There was a very tough time for a month or so that I faced. My daughter faced rather, but it was very stressful for all of us. And but in those times is when this really works and it gives you a lot of relief because उस मुश्किल समय में भी आप बस ये सोच के करो कि थैंक यू ये सब ठीक होने वाला है, थैंक यू ये सब ठीक होने वाला है, थैंक यू सब ठीक है, अभी भी सब कुछ बहुत ठीक है, शुक्र है कि हमें एडमिशन मिल गया, शुक्र है कि वो स्कूल तो जा रही है, शुक्र है. तो ये मतलब आप शुक्र करते रहो जो चीजें अच्छी हो रही हैं और वो धीरे 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 इट्स लाइक दिस गांठ बंधी हुई Chain एंड बन टैंक जाती है धीरे अच्छी चीजों की. खुलती जाती है खुलती जाती है. तो उस प्रकार से वो चीजें ठीक हुई हैं. एंड यू नो समटाइम्स यू जस्ट हैव अ मेल्ट डाउन, समटाइम्स यू जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम. एंड मैं तो मेरे तो शुक्रान का बस यही है कि मैं लिख लेती हूँ या मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ एंड आई जस्ट गो एंड क्राई देयर और हैव अ मेल्ट डाउन कि Best thing. भैया Yeah, yeah, true. But सरेंडर yes. टू यू सरेंडर टू योर फेथ. जो भी जिस भी चीज में आप बिलीव करते हैं कि अब आपके हवाले. And True. And as you all know this thing guys कि जैसा मिसेस बेन्स ने पहले ही कहा था कि मेहनत करनी पड़ती है. दिस इज द फैक्ट. बट क्या होता है कि व्हेन यू राइट योर एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर थिंग, जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, किसी आजकल बहुत ज्यादा सुनने को आ जाता है जो कि फैक्ट है. फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट हम सुन ही लेते हैं कि हाँ इसका नहीं चल रहा अच्छा, या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किसी को फैमिली इश्यूज है, किसी को सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कोई ऑफिस में बहुत परेशान है, एवरी डे समबडी डजंट वांट टू गो टू ऑफिस, they are working there but they are again complaining and cribbing about it all the time कि नहीं अच्छा चल रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा है. So the thing is this कि you have to decide it what you really want to do it, and then there are certain things in which we like your guides or mentors, they help you to focus on that thing in a more prominent way I must say, and then you start getting opportunities. होता यही है, it's a kind of magic only कि आपको काम तो कर रहे हो कि आपको काम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपके जो रास्ते बंद थे ना वो आप अपने आप ही खोल लेते हो. बहुत सिंपल सी बात है. हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते होते थे कि बार बार मत रोया करो एक चीज को, जो दिया है उसी पे शुक्र मनाओ. तो हाँ वो एक्चुअली फैक्ट है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे. इट इज प्रूव्ड. हर कहीं हर जगह साइंस भी मानता है ये चीज कि दे आर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट. सो दैट इज द फैक्ट. बट अब हम क्या है, हमने हर चीज को ना हम अपने एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं कि हम कहते मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है. अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो बार बार उस चीज को याद क्यों करते हो? क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको वो चीज पिंच नहीं करेगी, तकलीफ नहीं देगी. नहीं मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं लेट गो कर दिया. एक बड़ा फेमस वर्ड है आजकल लेट गो. बट एग्जैक्टली लेट गो करना क्या है आपको पता है? सबको पता है लेट गो क्या करना है? पता ही नहीं है. बस लेट गो करो, जाने दो. बट जाने तो हम देते ही नहीं है ना. हम तो बिल्कुल जो मैंने बोला ना कि वो जो 10 बातें भूल जाएंगे, लेकिन वो जो 2 बातें होती है ना, यार मैं सब भूल सकती हूँ पर मैं ये बात तो ना कभी नहीं भूल सकती, या मैं सबको माफ कर सकती हूँ, इस बंदे को तो मैं कभी नहीं माफ कर सकती. ये वाली जो चीजें आती है ना हमारे अंदर से, नॉट लेटिंग गो. और वो ग्रजेस this is रहते not letting go. Yeah, if you want to if you want to receive miracles, magic, or if you want to receive good things, the things which you want in your life, you have to learn the art of letting go, learn the art of change your desired position from your current situation. You have to learn such things. And one very important question, Mrs. Bains, what do you think, like do you think to practice law of attraction
you need a proper guide or mentor, or you can start up on your own also if you're going to begin it first time? Yeah. So I think if you're really interested, best is to do it with a mentor, do it with someone. And if you're not convinced about it, then read up a little bit about it. Read up, and I would say the books Secret and Magic are the best things to read on it, or watch the movie or whatever. Read up about it if you're not convinced about the theory or how to practice it and everything. Maybe then you'll get convinced. Or if you don't want to read up anything, join a mentor. Join, देखो मैं कहती हूँ आपको ज्वाइन करके भी आपको इसमें फेथ नहीं आया कोई बात नहीं, बट ये ऐसी चीज नहीं है कि इसमें कुछ बुरा हो जाएगा. मतलब देयर इज I would say there is no age and there is no time and there is no thing, and there is no such thing to not learn. Why not learn? I mean, just take it as something new to learn, and it will only I mean, firstly, I guarantee you that it will teach you to just be grateful first and foremost, to just be a little more happier. If you're Yes. still days of I don't have enough, or this is not working out, that is not working out, it will help you to get out of that thing. And yes, a mentor helps you because he or she will guide you. He will help you to do the practices that work for you, and maybe help you to release some blockages that you're not able to. And so you learn the process well, and like I said, and then some things just stay with you and then you can continue with them. Yeah. And Mrs. Bains, what is your favorite loa technique? Which is like go to with that. कि नहीं नहीं ये करना है. Except journalism. Yeah. Except this journal writing and all. Yeah. So my favorite technique is actually I do that. The seven. I make a circle and then you write your seven things that you want or desires or something in your mind that is there. You write it in that and you just read it and you leave it, and you keep reading it from time to time. It's for me. That's like a reminder of where I want to go, what I want to do. Am I taking the steps to achieve that also? And as well as if you keep reading it, I feel that it's going to work out. It's going to work out. So that is one of my favorite techniques that I like to go back to. And I usually, I think since I've learned it from you, I've been a little regular about it. So, and I feel it works for me. Wow. I love to Each go and back. every loa technique work for us. That is So fact. like go back and ये हो गया. Manifested, yeah. क्योंकि वो accomplishment लगती है बड़ी ना. You feel that it's manifested or something has worked out. So I think that is one of my favorite techniques. I think that I go back to, and yeah, I think that is my favorite one. Wow, great. So yes, guys, let me just tell you one thing कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी. So I just want to conclude it with this कि पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें कोई भी सेकेंड थॉट है ही नहीं. We have to be positive. हमारा पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव होना ज़रूरी है for us, for हमारे लिए. बट नेगेटिव सिचुएशन में आप हर टाइम पे पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, ये भी रियलिटी है. तो उस नेगेटिव सिचुएशन से आप कैसे शिफ्ट करें कि जो सही है हमें वो सोचना है. वी हैव टू शिफ्ट ऑन टू करेक्ट थिंकिंग कि सही क्या है इस टाइम पे सोचना. ऑब्वियसली कहीं कुछ नेगेटिव हुआ है देन यू कैन नॉट बी अरे पॉजिटिव रहो. पीपल विल नॉट टेक इट पॉजिटिव. दे विल से कि व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन इफ देयर इज अ बिग लॉस, लाइक बिग, आई एम टॉकिंग अबाउट रियली बिग लॉस. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इफ आई टॉक अबाउट रिलेटेड टू योर करियर, कि आप जो चाहें वो नहीं मिल सकता है. देयर आर सर्टेन, ऑब्वियसली आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आप बस अफर्मेशन, भाई मैंने तो अफर्मेशन लिख लिया, दिव्या ने कहा है या बहुत मेरे मेंटोर ने कहा है कि अफर्मेशन पढ़ो सारा दिन हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, पढ़ के सो जाना है. आई टेल यू द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट. Yeah, absolutely. Yeah. Once I Jim Carrey का एक बड़ा funny interview था. He was also talking about law of attraction, and he said I wrote a check to myself of $10 million, and I kept it that it's going to materialize one day. Okay, so somebody asked me, he said, "Oh, you wrote the check and then it just and then it materialized." He said, and of course I worked hard also. You can't just write a check to yourself and dated to future and then go sit on the beach and eat a sandwich. He's like, you have to work hard too. You have to work.
बिकॉज विदाउट एक्शन देर आर 3 थिंग्स, लाइक आप लिख रहे हो, आपने क्या कर दिया, गोल सेट कर दिया, अपनी इंटेंशन सेट कर दी है कि आपको चाहिए क्या है, राइट, बट मेंटेन, आपने BMW ले आया, आपने गाड़ी ले आए, लेकिन उसकी मेंटेनेंस तो चाहिए होती है ना, मेंटेन तो करोगे ना आप उसको, तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है अपनी इंटेंशन को, कि वो उसी एनर्जी में मेंटेन रहे। तो वो मेंटेन कैसे रहती है, देयर आर सर्टेन टेक्निकल टर्म्स जो कि मैं अपने सेशन में लोगों को बताती हूँ, यू हैव टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी, कि वो एनर्जी डालनी है उसमें, देन यू हैव टू टेक एक्शन अबाउट इट, यू हैव टू बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने लिखा, आपने मेंटेन करा, आपको यकीन होना चाहिए कि ये तो मेरा है, बस कहीं है रखा हुआ यूनिवर्स ने इसको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है, जैसे मम्मी कुछ चीजें रख देती है ना संभाल के कि जब बड़े होगे तब मिलेगा, तो बस वही यूनिवर्स ने करा है कि आपके लिए रखा हुआ है, आप जब उस पर काम करोगे, जब आप फोकस करोगे, फोकस ही नहीं है तो क्यों मिलना चाहिए आपको, बताओ मुझे, नहीं मिलेगा ना। सो बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर फोकस एंड क्रिस्टल क्लियर डिजायर यू हैव टू मेक, एंड दैट इज एन आर्ट टू राइट एन अफर्मेशन। ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख लें, कि इंटरनेट से उठाई और आपने लिख ली, मैंने तो ये अफर्मेशन लिख ली है, नहीं, हर एक की जिंदगी अलग है, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की कहानी अलग है, इट इज नॉट लाइक दैट कि just do it blindly. Yeah, that's true. You need yes. to be relevant to your life, what works for you, and what you can do physically, what you can manage logistically. Because हर एक टेक्निक सब लोग कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं पाती है। कौन सी टेक्निक आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, देन आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है ज्यादा है, आपका करियर, आपका मनी और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका सेलिब्रेशन टू थिंग्स एंड कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ बिल्कुल डाउन है, किसी का हो सकता है रिलेशनशिप बहुत खराब है, किसी का हो सकता है मॉनिटरी चीजें नहीं संभल पा रही है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, यू हैव टू फोकस एंड वर्क टुवर्ड्स दैट थिंग। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यू कैन नॉट डू इट जस्ट रैंडमली। आप एक बार आप सीखेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे, तो चीजें बहुत इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएंगी। और मैं जो एक चीज सबसे ज्यादा, जब मैंने लोआ की प्रैक्टिस शुरू करी थी, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लोआ आई गेस इन 2016 and I read the book Secret in 2013. यकीन मुझे तब से ही था, मतलब I thought of it कि कुछ तो होता है ऐसा, मूवी भी देखी थी मैंने 14-13 में ही देख ली थी, then मैंने प्रैक्टिस करी and within a week magic happened with me, within a week मेरे साथ चीजें ऐसे 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 टक 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 करके सही होना शुरू हो गई। जो सबसे बड़ी चीज थी, मिसेस बेन्स नोज मी, तो मेंटली आई यूज्ड टू बी लाइक स्ट्रेस्ड आउट बहुत ज्यादा, कुछ चीजें हर एक की लाइफ में होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी मैं, मतलब आई वॉज ऑलवेज इन अ स्ट्रेस कि क्या है, मतलब होता है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, जिसको हम काउंट ही नहीं करते हैं, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप ज्वाइन करते हो ना, विद इन अ वीक यू गेट मेंटली आप इतने काम फील करते हो ना, कि वो जो 70% का जो आप फालतू का बोझा लेके चल रहे होते हो, इट इज ऑल गॉन, और वो कहाँ गया आपको पता ही नहीं लगता है। बट इट डजंट मीन कि चीजें रिसाइकल नहीं होती हैं, चीजें रिसाइकल भी होती हैं, बिकॉज दैट इज इट, लाइफ गोज लाइक दिस। ECG सबने देखा ही हुआ है, टीवी में तो देखा ही हुआ है, तो लाइफ गोज लाइक दिस, जब ऐसे आ जाएगा तो मीन्स डेड, राइट। तो आपको लेकिन एक पता लग जाता है कि कैसे मुझे शिफ्ट करना है, एंड आई डिड इट personally. I faced a big loss in my life, like when I lost my father, so I could not speak much, I could not express much about it, but I know the loss and how I shifted myself, कि मैं कैसे उस चीज से निकल के काफी जल्दी बाहर आ गई, समझ रहे हैं आप। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आती हैं। Then why mentor or why coach? Because I have also done, I have learned it, then I have done this thing, certification also, I am a certified law of attraction coach, तो वो फिर मैंने सिखाना भी शुरू करा इस चीज को। But why these things are important, क्यों एक कोच या मेंटोर की जरूरत होती है? It is all because the mentor will tell you a step by step how to go step by step. You cannot just randomly jump on something. Yes, Mrs. Bains, please tell. Like one can not randomly. You have to, because everything is not relevant to you, और हर एक टेक्निक हर कोई कर नहीं सकता. So that's where the guidance comes. And also I feel the main thing for guidance is कि आप उसको कर तो लोगे regularly for 20-25 दिन, and once you're doing it for 7 days, 10 days, once you get a bit of a flow of it, then आप अपने आप you're in that line of doing, because अपने आप कई बारी just books पढ़ के, internet पढ़ के आप उसको regularly follow कर नहीं पाते, because you're like चलो आज कल कर लूंगी, like that.
But when you have a mentor who's telling you, sending you something every day, कि भैया आज ये कर लो, आज ये करना है, whatever, you then आप थोड़े से उस mode में रहते हो, like a class that okay, let me just finish this because you've started it, you want to finish it. So you are in that mode, and once you're done with it, then you want to, just अपने आप थोड़ा flow आ जाता है, and some things, like I said, stay with you, and then you continue with them. So yes, that's forever. True. So yes, guys, that's. Just want to ask you, Divya, so you can just tell the viewers who are still watching us that what is it like? What kind of courses are you offering? So if there's anything they can follow the page. Yeah. So if you want to join and begin your magical journey with law of attraction, and I am there to guide you, I'm there to tell you that how to go for it step by step. So I've designed few courses. You can join my page. First of all, start following my page, that is Sync and Shine with Divyaa S.Kumar. You'll get the link, and I've given WhatsApp number also. You can directly, WhatsApp me also, or you can DM me to know more details about it. So there are certain courses which run. There are one very special course which I have designed for some people, those who wants to really do it and fasten up the things. बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए ढंग से काम नहीं कर रहा है, कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है. So I've started a 7 days course also, which I'm going to start very soon, and then there is one 21 days course, then there is 101 session also. You have a basic course for people who don't know anything at all about it. ऐसा भी है आपके? हाँ, बिल्कुल है. That is that 7 days course कि उसमें बेसिक ही होगा, and उसमें बिल्कुल बेस से शुरू होके you will get to know about law of attraction. You'll start manifesting there only. This is my surety to all of you. You'll start manifesting there only, and yes. And after that, there are 101 session for 21 days. If somebody wants, like there are people, they want to do it separately. They don't want to, say ki do in group. So that is also available. And there is group session, of course, for 21 days. So these are three types of courses which, sorry, Ms. I'm going to people who are still watching, and anybody who's have faith. It's not about religion or anything. I would say एक faith रखना, एक शुक्रान करना बहुत जरूरी. There's nothing religious about this whole exercise. It is just your thoughts. Yeah, your thoughts. That's it. Believing there is some energy. Just keep it. It's only energy. Yes. Energy. So you need to have faith. It's just to restore your faith in that energy. That एक energy है जिसमें आपको थोड़ा faith रखना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा रखो और थोड़ा काम करो उस energy के साथ, तो you can really do wonders. There's no stopping you from anything, whether it's personal problems, whether it's career related problems, or anything at all. So I would say go for it, guys. And Divya is a great mentor. And if you find other mentors, you can find other mentors. We are here to talk about law of attraction and its benefits. And you can follow Divya on her page, which is what is it? Sorry, Divya. Sorry, Sync and Shine with Divyaa S.Kumar. Sync and Shine with Divyaa S.Kumar. Yeah. Shine with Divyaa S.Kumar, and please do follow her page. And if you can reach out to her and DM her about anything, and I can assure you that she's a great person. She's just a great person. So she herself has such a positive energy and vibe to herself that वो होता है ना, कुछ लोगों की कंपनी में रहने से सब अच्छा हो जाता है. वो एक पिक्चर का डायलॉग. Again, so many kind words from your end, Mrs. Bains. Thank you so very much for everything. But yeah, and all the best to you. Thank you so very much, and many more happy times to all of us, and enjoy. Thank you to each and every one. Thank you for watching this, and gratitude is the only key to abundance. That is one thing. And one affirmation I just want to tell you guys, if you really want to change your life, if you want to begin your journey just from today or from this very moment, you start saying this thing all the time. I am so thankful to you, universe, that I am so blessed, and something very good is happening with me all the time. Right? Yeah. Just a small affirmation, if you start telling you again and again, just tell it again and again. Just give yourself this auto suggestion all the time. मेरे साथ सब कुछ बहुत amazing, बहुत बढ़िया हो रहा है, और मैं बहुत blessed हूँ. मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है. जब भी कुछ गड़बड़ आ जाए ना दिमाग में कि मेरे साथ ये नहीं हुआ,
just switch it then and there, and मैं बहुत blessed हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है. Just keep singing this thing with you yourself, right? Yes. And I am not saying it. This is written in so many good books. I'm telling you. So that's it, guys. Thank you, and please follow me on Sync and Shine, Divyaa S.Kumar, and thank you so very much, Mrs. Bains. Thank you, guys. Thank you. Somebody just wrote thank you 3 times. So we'll end on that note. So thank you very much. Thanks, Divyaa, and thank you everyone. Bye bye. Good night. Bye.